that means engineering background. How many of you are from engineering background? बोलो कौन कौन है engineering background से? मैंने हूँ कृष्णा. Okay, और the discussion will be in English, so don't worry. Huh? Those of you who are from South or do not understand English, do not understand Hindi, don't worry. I will discuss in English. ठीक है? I hope you all can see the screen. Okay. सबको दिख रहा है? Can everyone see the screen? Yes, sir. हाँ दिख रहा है. Yes, sir. Okay. So first of all, this is a very rare examination. हाँ, बहुत कम होता है. And this kind of examinations are actually very good because the competition is very less due to the syllabus and all. So if you study hard, you can easily qualify. What you need patience and the capability of writing. So this is the examination for the post of examiner of patents and designs. So general instruction and all, you all know this. I will not waste the time on this kind of discussions. This is a group A examination, that means equivalent to UPSC IAS examination. Same pay scale है, सब कुछ same है, so don't worry. Dates and all 14 July से start हो रहा है. The process for the application will start from 14 July and it will continue up to 4th August. So don't be so late. Those who wants to apply as early as possible. Okay. So point to be noted. What is the most interesting part of this notification is that the examination will conclude in 2023. That's the main thing because it is very, very interesting. Look, the preliminary examination is on 3rd September. Result is on 13th September. That means within 10 days. Mains examination on 1st October. And the mains examination will conclude on 16th October. So within 15 days, you will have your result. An interview on November 11th and 12th November. And by the 17th of November, you all, those who will qualify, you will be notified that whether you are selected or not. That's the most interesting part of this notification. That means within half of the year, you will have your job in your hand. So if you study hard, if you study hard and give your best, you will definitely qualify. ऐसा नहीं है कि एग्जाम बहुत कठिन एग्जामिनेशन इस एग्जामिनेशन में क्या चाहिए? इस एग्जामिनेशन में पेशेंस की जरूरत है, पेशेंस और पढ़ने की क्षमता. ठीक है. So there's a brief introduction about the office of CGPDTM and some description about the examination of patents and designs. We will discuss this all. You all know the vacancies, so I will not invest my time on this kind of discussion. Let us come to the point known of scheme of examination. So it is a 3-phase examination: Tier 1, Tier 2 and interview. The Tier 1 part is just qualifying. Okay. Marks of the Tier 1 part will not be incorporated in the calculation of final result. So you have to just qualify the prelims. Doesn't matter how much marks you get. Doesn't matter how much marks you get. So what is preliminary examination? It is a 150 marks examination. And there will be a pattern of CGL, that means general English, verbal and non-verbal English, quantitative aptitude, verbal and non-verbal reasoning, quantitative aptitude, general knowledge and current affairs, general science. Up to this is SSC CGL level. Let me be very clear to all of you, SSC CGL level. Okay. But after that, the section of 15 marks which incorporates IP legislation in India, WIPO and related treaties, this has 15 marks. 15 marks hai yahan pe. So this is the new
part you all should know about this, and I will discuss about this also. So don't worry. कैसे करना है क्या नहीं करना है I will tell all of you. How much you have to prepare. Okay. So there is a criteria for minimum qualifying marks. For the general category students, the students has to score minimum 30%, OBC EWS 25%, and others 20%. Minimum qualifying marks does not represent the eligibility for qualification. If you get less than 30% marks, you will be readily omitted from the competition. It means that, okay. So 150 marks examination and 30% means 45 marks. Suppose a general category student gets for less than 45 marks, he will readily out of the competition. He will be readily out of the competition. So to stay in the competition, the student has to score more than 45 marks. But this is not the cutoff marks. The cutoff marks will be decided final. After all the copies are checked, after that the final marks will be decided. What will be the final cutoff? Okay. And it is very clearly written that 20 times of the students will be called for. 20 times the students will be called for मेंस एग्जामिनेशन. इसलिए मैं बोलता हूँ टाइमली ज्वाइन करने के लिए. Now comes your mains paper. The mains paper consists of two papers, paper 1, paper 2. What is paper 1? Paper 1 is OMR based and paper 2 is descriptive writing. Where paper 1 has 100 marks, paper 2 has 300 marks. What is paper 1? Paper 1 is as similar as CGL, but there is an extra part. What is that extra part? Knowledge related to intellectual property rights. Knowledge related to intellectual property rights. And out of 100 marks, there are 20 marks. So you have that knowledge. ये intellectual property right क्या होता है? What is intellectual property rights? इसमें 20 marks, that means 1/5 of the marks is from that section. So it is very, very important to have that knowledge of intellectual property rights. Okay. Now come to the paper 2. In the paper 2 of the examination, there are knowledge of scientific and technical discipline. That means you must have the knowledge of. That means you must have the knowledge of your subject. You must have the knowledge of your subject. Cumulative marks जब calculate किया जाएगा, when the cumulative marks will be calculated, paper 1 and paper 2 will be assigned 80% and 20% from interview. Suppose the interview is of 100 marks and the student is getting suppose 80. Suppose 80. So 20%. So 20% of 80 is 16. So 16 marks will be added. 20% of 18 is 16. So 16 marks will be added. Am I clear to all of you or not? Is anyone there who has not understood what I have said? Is anyone there? Any question? Hello? স্যার বলছিলাম যে পেপার 2 থেকে ইংলিশে রাইটিং এর কিছু ব্যাপার আছে? পেপার 2 তে ইংলিশের? হ্যাঁ, মানে এসএ টেসে বা নোটেশন। This is not mentioned about the English paper. They have changed the pattern. Okay, they have changed the pattern. So there is no mention of the English. শুধু সাবজেক্ট হবে? হ্যাঁ, as per the notification there will be subject. Okay. As per the notification, you can clearly read in this. I hope you can see the screen. It is clearly written that paper 2 will test the knowledge of the candidate in the technical and scientific discipline of the vacancy applied for. So where is English? Is it clear or not?
They have changed the pattern here. Okay, because they are already testing the English language part in the paper 1. Okay. तो 2 बार इंग्लिश क्यों लेंगे? Is it clear to all of you or not? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So interview has 20% weightage. Interview has 20% weightage. And medium of examination is English only. There is no other option. You cannot write the paper in vernacular languages. Okay, so it will be completely in English. Now come to the very important part, that is syllabus. I will take one syllabus and explain it. Okay, I will take only one syllabus. As most of you are from physics background, most of you, I am not telling all of you, most of you, so let me take the physics paper. Look, what is there in the physics paper? Mathematical methods of physics. Please everyone stay here and try to understand what I want to say finally. Mathematical methods of physics, classical mechanics, TMT, quantum mechanics, thermodynamics and statistical physics, electronic experiment methods. Up to this section, up to this part, okay, up to this part, that means electronics and experimental methods, electronics and experimental methods, up to this part, the syllabus is BSc level. The syllabus is BSc level. After that, there is a repetition. Mathematical methods of physics, classical mechanics, EMT, quantum mechanics, thermodynamics, statistical physics, electronics and experimental methods, atomic molecular physics, condensed matter physics, nuclear particle physics. This is most of this section is related to the MSc part. Most of this section is related to the MSc part. Why I am telling about MSc? Let me give you an example. Look at the thermodynamic and statistical physics part. In the last part, there is Ising model, BE condensation, diffusion equation, random walk, Brownian motion, and introduction to non-equilibrium processes. These subjects are not taught in the BSc level. These subjects are taught in the MSc level. So you have to study the MSc part also. Those who are from the general science part, physics, chemistry, okay, they have to study both BSc and some part of the MSc for the examination. Is it very much clear or not? Yes. But in case of technical section, the technical section का qualification क्या है? BTech है. The qualification of technical section is BTech. So BTech part has only BTech section. It means जो तुम लोग BTech में पढ़ते हो बस वही है. Okay? जो तुम लोग BTech में पढ़ते हो बस वही है. इसलिए बाकी जो लोग तो those who are from engineering background, they do not have to worry. Their syllabus will be as per the BTech part, as per the BTech section, okay? As per the BTech section, okay? So this is the syllabus, and this was the discussion of this is actually introduction of the examination. Anything to ask? Then I will start this next part. Anything to ask? फिजिक्स वाले के लिए ज्यादा सिलेबस है, He? फिजिक्स वालों के लिए ज्यादा सिलेबस है. I am not understanding you clearly. Hello? Chapter, first of all, the syllabus is not huge. Okay? The syllabus is not huge. I will tell you how to read, and the syllabus will be very lucid if you give your time to the examination. All of you listen one thing and understand very clearly. These are official level examination, okay?
in case of an officer level examination, you must devote yourself some time. In case of officer level examination, you must devote yourself some time. You have to give 8 to 10 hours of time in a day for this kind of examination. Because this kind of examination, you cannot take mains preparation after the prelims. You have to take a simultaneous preparation. Is it clear or not? You have to take a simultaneous preparation. In case of simultaneous preparation, if you are giving 3 hours for prelims preparation, you have to give 7 to 8 hours for mains preparation. And this kind of preparation can be taken. Okay, this kind of preparation can be taken if you are devoted for your study. If you are devoted for your study and you are immensely seeking a job right now. You badly need a job right now. In that case, you can give yourself to the examination. That means you need a devotion. Without devotion, without patience, without a writing capability, such kind of examination cannot be qualified. If you are thinking that you will just turn over some pages and go to the examination and qualify it, you cannot. It is impossible. হ্যাঁ সুমনা, স্যার বলছিলাম যে আমাদের প্রিলিমসের যে সিলেবাসটা আছে আপনি বললেন এসএসসি সিজিএল এর সাথে অনেকটা একই রকম। স্যার আমরা আসলে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের যারা স্টুডেন্ট অনেকেই তো এই ধরনের এক্সামের কোনো প্রিপারেশন আগে নিইনি, তো সেক্ষেত্রে কিভাবে কি পড়বো কোনো আইডিয়াই সেরকম নেই। Okay. I am coming to that part. She was asking that those who are from science background, they are not quite familiar to the SSC CGL level syllabus and all, because if you are not giving, you haven't give the examination, you are not familiar with their examination pattern or how to study. Okay, I will suggest some specific books for the examination. I will suggest some specific books particularly for that general part. Specific books. Okay. Specific books, specific study material. Some of that I will also provide, so don't worry. Quantitative aptitude section and reasoning is very easy. Quantitative aptitude section and reasoning is very easy. English you can easily handle the English part also if you have the knowledge of vocabulary and the knowledge of the grammar. And for the GK part, that is unpredictable, because that is GK is infinite. Okay, you cannot constrain it to a particular syllabus. Questions come from any section, any part, anywhere. And for the current affairs section, I think 1 year's current affairs will be enough. 1 year. Okay, if you study 1 year current affair very sincerely, you will qualify, or you will get familiar questions. Okay, CGL के लिए मैं कुछ बुक रेफर कर दूंगा CGL पार्ट के लिए. I think that will be helpful, so you don't have to worry. I am here to guide you all, and I will guide till the very end of the examination. So don't worry, I will suggest some books, suggest how to study. Rest is in your hand कि तुम लोग पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे. I can say, but I cannot make you read, na. That's your responsibility. Or for the physics part, I will provide some assignments. Okay, for the physics part, I will provide some assignments. If you solve those assignments, your practice will be done. That depends on you whether you are interested for their assignments or not. That is your part. उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ assignment provide करूंगा. अगर तुम लोग करोगे घर में, तो that will be helpful. Rest is in your hand. For the physics part, I am saying. Any question before moving to the next section? Any question?
হ্যাঁ সুমনা, স্যার বলছিলাম আমাদের রিজনিং আর কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড এই দুটো যে পোর্শন টায়ার ওয়ানে আছে, এইগুলো স্যার যখন করতে গেলাম তখন দেখছিলাম যে প্র্যাকটিস নেই বলে জিনিসগুলো করতে পারছি হয়তো, কিন্তু অনেক প্র্যাকটিস টাইম নিয়ে তো লেগে প্র্যাকটিস যাচ্ছে। করতে হবে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে প্র্যাকটিস স্যার না থাকলে প্র্যাকটিস না থাকলে প্র্যাকটিস করতে হবে, তার রেজলিউশন আর কি হতে পারে? স্যার প্র্যাকটিস মানে কিভাবে করবো? মানে এই এক্সামটা তো মক টেস্টে সেরকম কোথাও অ্যাভেলেবেল নেই। প্র্যাকটিস কিভাবে করবি সেটা আমি বলে দেবো। ওকে স্যার। आगे अरे सब कुछ एक साथ नहीं खाया जा सकता। हाँ, you cannot eat everything whole together. There's a step by step process. खाना मुंह के अंदर जाने से क्या स्टूल होके निकल जाता है? नहीं निकलता है ना। There's a process. पेरिस्टाल्सिस, उसके बाद स्टोमक, उसके बाद इंटेस्टाइन्स, उसके बाद निकलेगा ना। That means there is a process. So you have to follow that process. हाँ रेशमा, Sir, my humble request to you, sir. Sir, we want proper guidance for the mains physics, the syllabus, according to syllabus. For the descriptive writing, for to practice the writing skill. So, can you provide a guidance for that? हाँ, I will provide guidance for that also. Don't worry. I said na. Thank you, sir. I will discuss today also how you have to, which books you have to study for prelims, which book you have to study for the theoretical section, BSc section, and which part for the MSc section. I will tell. Don't worry. So Okay. now let us come to the next part. Now let us come to the Sir, next hello. part. Ashutosh. Sir, in the prelims and the mains, the syllabus which are not present in the SSC, that part can you tell from where we can study? If you That is see in, the previous year question papers of this examination, which yeah, has already been provided in the group, 2016, 2015, 2018, both prelims question papers are available in the group. yeah, There is if you clearly observe that part, yeah, except from the part related to the institution you are going to be the yeah, part of, the rest of the part is SSC CGL level. Okay, yeah, yeah, not more than that. yeah. I want to So ask if you, that from where we can study that is not mentioned, that is not present in SSC, that part of syllabus from where we study. so you are एक ग्रुप चैट अभी मत करो, करना है तो पर्सनली करो. So that part, that means you are telling about the IP, Yeah, intellectual yeah. property part. I will tell. That's why the Oh, meeting now. okay. So let us come to the next part, which is the part he is actually asking for. Okay, which is the part he is actually asking for. Let us come now to the next part. So I have already sent this zip file in the group. Okay, I have already sent this zip file in the group. So कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो बस हमको डिस्कस करना है. We will discuss how to study and क्या क्या पढ़ना है, what to study, how to study and what to study. So this particular PDF for a 471 kilobyte, there are the laws, Intellectual Property Act in India. तो क्या क्या लॉ है और कब कब वो पास हुआ, वो साल तुमको याद रखना है फॉर द MCQ पार्ट. हाँ, तो सभी लॉस यहाँ पे मेंशन्ड है, साल को याद रखो कौन से साल में कौन सा लॉ पास हुआ है. ओके, और यहाँ पे जैसे पेटेंट्स एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, द पेटेंट्स एक्ट 1970, यू हैव टू स्टडी इट इन डिटेल्स. ओके, यू हैव टू स्टडी इट इन डिटेल्स, द पेटेंट्स एक्ट 1970. So the details are currently mentioned here. What is the subject? Okay, what is the subject? What are the notes? Okay,
कब हुआ, कितने तारीख को इसको इंप्लीमेंट किया गया, दैट मीन्स द लॉ केम इनटू फोर्स April 20, 1972. Okay, so this you have to study these laws. Peters Amendment Act 1999, Peters Amendment Act 2002, Peters Amendment Act 2005, Laws of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001. So you have to study all of this. This PDF is very, very important. This PDF is very, very important. You have to study the law, just the outlines. Okay, you are not in details. Sorry, not in details. You have to just study the outlines. Is it clear to all of you or not? You have to study the outlines. कौन सा लॉ कब पास हुआ है और उसका विषय वस्तु क्या था, बस. Is it clear? Yes, sir. तुम लोगों ने ढूंढ के निकाला तो थोड़ा पढ़ लेना घर में. ये देखो, this PDF is about the agreement between Indian Patent Office and International Bureau of World Intellectual Property Organization, that is WIPO. What is the full form of WIPO? World Intellectual Property Organization. Is it clear? Clear. Okay. So there are some agreements. Agreements में क्या है, एक preamble है. There is a preamble, terms और उसका expressions. Terms और उसका expressions. ठीक है. जैसे treaty. Treaty का मतलब क्या है? What is the meaning of this? Meaning of what treaty? Patent Cooperation Treaty. Regulation का मतलब, एक मिनट, हाँ एक मिनट. इतना धीरे धीरे आप टुक करेंगे कैसे समझ में आएगा? थोड़ा सा ना, ठीक है कीजिए, आप क्लास ले रहे कीजिए. ओके, then just regulation means regulations under the treaty. Administrative instruction means the administrative instruction under the treaty. So ये terms और expressions को पढ़ना है. ओके, फिर basic obligations क्या है, competence of the authority क्या है, just as a give a reading. Okay, so that the things are very much clear to all of you. Give a reading. Is it clear to all of you or not? I am telling that give a reading. Okay, पूरा तो याद नहीं रखा जा सकता. It is very, तो अगर पूरा हम याद नहीं रख सकते, if we cannot remember all the stuffs, then we have to find out a gist. We have to find out a gist. So how to make a gist? घर में पढ़ाई करके, पढ़ाई करो, कॉपी लो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में आ रहा है उसको कॉपी में नोट डाउन करो. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Next, this one. What are goods? What are services? ठीक है, गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है, ये पेटेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. समझ में आ रहा है? These are very important terminologies for patents and designs. You have to understand what are goods, what are services. अभी गुड्स के अंदर कुछ क्लासेस है, गुड्स के अंदर कुछ क्लासेस है, सर्विसेज के अंदर कुछ क्लासेस है. गुड्स के अंदर 34 क्लासेस है, सर्विसेज के अंदर 9 क्लासेस है. ओके, सर्विसेज के अंदर 9 क्लासेस है. तो क्लासेस में क्या क्या है, बस उसका एक छोटा मोटा अंदाजा तुमको लगा के रखना है. एक साथ याद नहीं रखना है कि एक साथ क्या क्या, इतना तो याद कोई नहीं रख सकता, भगवान भी नहीं. तो क्या करना है, क्या क्या पढ़ता है क्लासेस के अंदर, बस उसको याद रखना है. जैसे क्लास 1 के अंदर, इफ यू कम टू दिस पीडीएफ, क्लास 1 के अंदर क्या है, केमिकल्स यूज्ड इन इंडस्ट्री, साइंस एंड फोटोग्राफी, एज वेल एज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री. समझ में आ गया क्या होता है क्लास 1 के अंदर? आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. बस ऐसे
बस ऐसे पढ़ना है इसको, बस ऐसे इसको पढ़ना है, ठीक है। सब कुछ रट्टा नहीं मारना है, बस उसका जो नीड, उसका जो क्या बोले एक्सट्रैक्ट है, बस उसको दिमाग में रखना है। यू हैव टू कीप इन माइंड ओनली द एक्सट्रैक्ट ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग, ओनली द एक्सट्रैक्ट ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग। फिर एक अच्छा पीडीएफ है, मैं दिखाता हूं। देखो देखो, ये काफी अच्छा एक बुक है, ठीक है। रुपिंदर तिवारी और ममता भारद्वाज जी ने लिखा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ए प्राइमर फॉर एकेडेमिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या चीज है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यहाँ पे देखो। अगर तुम इसके सिलेबस को देखोगे, इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज होता है उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज पढ़ने का जरूरत नहीं है, कैटेगरीज पढ़ने का जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग में पढ़ोगे, इतना डिटेल्स पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है बेकार में। उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, क्या चीज है वो, क्या काम करता है, उसके बारे में बताया गया है। इस पार्ट को पढ़ना 10 पेजेस है बस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। चैप्टर 3, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 3। उसके बाद ट्रीटीज है, ट्रीटीज को कैसे पढ़ना है, कब कैसा ट्रीटी कैसे साइन हुआ, बस कब कैसा ट्रीटी कहां पे कैसे साइन हुआ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, नथिंग। इज इट क्लियर? उससे ज्यादा कुछ नहीं, कौन सा ट्रीटी कब साइन हुआ है बस वही पढ़ना है। ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सब सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? Yes, sir. ओके। हाँ सुन रहे हैं। उसके बाद आई, हाँ पता नहीं बात। उसके बाद आईपी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इंडिया में क्या क्या आईपी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में है, ठीक है। बस बस और कुछ नहीं इस बुक से। गूगल का क्या होगा, एक मिनट, एक मिनट, हाँ टावर लगेगा तो हम ऑफिस से लगे देंगे। हेलो हेलो, Yes, sir. ओके। ये तो हो गया ये वाला पीडीएफ। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे 2 फ्लो चार्ट है, हाँ। प्रोसीड्यूर और रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, ये तुमको पढ़ना है। ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट तुमको पढ़ना है, ठीक है। ये कैसे हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसीड्यूर होता है ट्रेडमार्क के लिए, उस प्रोसेस को जानना है, ठीक है। जस्ट रीड द फ्लो, जस्ट रीड द फ्लो, कैसे कैसे क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, बस उसको पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पे पेटेंटिंग कैसे होता है, पेटेंट्स के बारे में है। प्रोसीड्यूर ऑफ ग्रांट फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट, इसको पढ़ना है। कैसे पेटेंट होता है, कैसे पेटेंट होता है, इसको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? पेटेंट कैसे किया जाता है, ट्रेडमार्किंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में है, इसको पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कोई कुछ पूछना है बोलो, कोई सवाल है, कोई सवाल है?
हेलो Yes, yes, sir. Sir, there is a lots of PDF in that file that you have sent for that part, which you have tell. Then up to that PDF, which I have to study, can you tell? That because there are a lot of I syllabus, I there am are a lot of open. PDFs. Can you see what I am sharing in the screen? Hello. Yes, yes. So in the screen, I am opening the PDFs and I am telling उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. I am Okay. clearly saying what you have to study and what you have to not. Oh. Can you I tell? hope you all have copies in copies. You have all have opened your copies. Note that down ना. Okay. क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैं तो भूल ही दे रहा हूँ. मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि सब पढ़ना है. No. सब कौन पढ़ सकता है? Okay. From that PDF, there are a lot of PDF. I am opening each and every PDF और उसमें से तो मैं Okay. दिखा रहा हूँ कि कौन से PDF से क्या पढ़ना है. Okay. If you are clear, if you are observing the discussion very clearly, you can understand. So is from this PDF कौन सा PDF खोला मैंने देख लो. फिर से दिखा देता हूँ. डालमिया वाला PDF खुला. इसमें मैं पेरेंट्स के बारे में भी बोल रहा था कि देयर इज अ फ्लो चार्ट ऑफ हाउ टू गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इन इंडिया एंड हाउ टू गेट पेटेंटिंग इन इंडिया. ओके, इन दोनों ये दो फ्लो चार्ट पढ़ना है कि क्या कैसे होता है, ट्रेडमार्किंग कैसे होता है और पेटेंटिंग कैसे होता है, इसको पढ़ना है यहाँ पे. ठीक है, फ्लो चार्ट को पढ़ना है. फ्लो चार्ट को याद थोड़ा पढ़ने से समझ में आ जाएगा. उसके बाद देखो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन. ग्रांट होने के बाद भी ऑपोजिशन हो सकता है. कौन कौन से ग्राउंड के में ये ऑपोजिशन हो सकता है वो तुमको मालूम होना चाहिए कि अगर ये होता है तो इस ग्राउंड पे पेटेंट को ऑपोजिशन किया जा सकता है. समझ में आ रहा है? तो ये वाला टर्म्स, ये वाला चीज पढ़ना है कि कौन से ग्राउंड के बेसिस में पेटेंट को अपोज किया जा सकता है और कौन से ग्राउंड के बेसिस में पेटेंट का ऑपोजिशन नहीं हो सकता है, वो मालूम होना चाहिए. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके. उसके बाद पेटेंट्स एक्ट. This PDF is a very large PDF, so don't get worried. You have to just remember the gist. Okay, Patents Act 1970 very important for the examination. Patents Act 1970 very examination for the examination. हाँ, देखो इतना तो कोई पढ़ नहीं सकता. तो ये तुम ट्रेनिंग में पढ़ोगे, अभी कुछ नहीं पढ़ोगे. तो ये PDF उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि पढ़ के याद नहीं रख पाओगे. इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ये वाला PDF जिसमें सभी लॉस और उसका कब, उसका साल. ठीक है दीदी, दादा তুমি টাকা নিয়ে নিচ্ছ না সোমবার তো আমি বলেছিলাম অত আস্তে কখনো শুনতে পাবো না. দুটো আছে মনে থাকে না. हाँ, तो यहां से इस वाले PDF से हम क्या करेंगे? वी विल स्टडी द एक्ट्स, देयर टाइम टेबल्स. उसमें से कुछ कुछ एक्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट सेक्शन वाला एक्ट, मेन IP लॉस इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर. मेन IP लॉस इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें जो जो एक्ट्स लिखा है उसका साल थोड़ा याद रखना. इसमें जो जो एक्ट्स लिखा है उसका साल थोड़ा याद रखना क्योंकि एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है. ठीक है, उसके बाद IP रिलेटेड लॉस
इम्प्लीमेंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करंट वर्जन में क्या क्या लॉज है। उसके बाद यहाँ पे पेटेंट्स एक्ट 1970 जो है, जो बहुत वाइटल है फॉर द पेटेंट एग्जामिनर एग्जामिनेशन, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ब्रीफली दिया गया है। ज्यादा बड़ा पीडीएफ नहीं है, इसके बाद इसमें एक बहुत ही सुंदर तरीके से ब्रीफली दिया गया है। बस 9 पेज का एक पीडीएफ है। देयर आर ओनली 9 पेजेस। थोड़ा तो पढ़ना होगा, थोड़ा नहीं पढ़ने से नहीं चलेगा ना। जैसे कौन से तारीख में ये इनैक्ट हुआ, 1970 का एक्ट है, मैंने बनाया गया 1970 में, बट केम इनटू फोर्स कब? 20 अप्रैल 1972। ये गलती एग्जाम में नहीं करना है। 1970 का लगा है तो 1970 में पास हुआ, ये नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा रह सकता है कि 20 अप्रैल 1970, 20 अप्रैल 1971, 20 अप्रैल 1972, नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा बोलो? केम इनटू फोर्स कब हुआ? ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है। अप्रैल 20 1970, अप्रैल 20 1971, अप्रैल 20 1972 एंड नन ऑफ दिस। ऑप्शन क्या होगा बोलो? 1972। हाँ, अप्रैल 20 कोई एक बोलो। 1972। अप्रैल 20 1972। इसमें क्या हुआ? वो केम इनटू फोर्स हुआ, दैट मींस वो पूरी तरह से लागू किया गया। लेकिन इनैक्टेड कब हुआ? उसके नीचे देखो, डेट ऑफ टेक्स्ट, दैट मींस इनैक्टेड कब हुआ। इनैक्टेड शब्द का मतलब होता है कि जो लॉ बनाने के बाद उसके इंप्लीमेंटेशन का प्रोसीड्यूर चालू किया गया, उसको इंप्लीमेंटेशन का प्रोसीड्यूर चालू किया गया। वो कब हुआ? सितंबर 19 1970, सितंबर 19 1970। सो दोनों के डेट का अंतर समझना है, एक केम इनटू फोर्स है और एक इनैक्टेड है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर। ओके। उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था? इन्फोर्समेंट ऑफ आईपी एंड रिलेटेड लॉस, आईपी रेगुलेटरी बॉडी, पेटेंट्स ऑफ इन्वेंशंस, ये उसका सब्जेक्ट मैटर था। और उसका नोट क्या है? नोट मींस तो किस आधार पे वो किया गया? दिस लॉ रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड द पेटेंट्स एंड डिजाइन्स एक्ट ऑफ 1911। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि पेटेंट्स एक्ट 1970 पेटेंट्स एक्ट 1970 रिपेल्ड एंड रिप्लेस्ड द फॉलोइंग लॉस। उसमें से ऑप्शन क्या होगा? पेटेंट्स एंड डिजाइन्स एक्ट 1911। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। ऐसे ही पढ़ना है, बस सिंपल, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। जब पढ़ोगे बंगाली में कहावत है लेखा पढ़ो। बंगाली में कहावत है लेखा पढ़ो। लेखा पढ़ो शब्द का मतलब होता है पहले लिखना उसके बाद पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, देन यू हैव टू रीड। इसका मतलब क्या है? इसका व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्ड? इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि जब भी पढ़ो लिख के पढ़ो। जो तुम पढ़ रहे हो अगर वो तुम लिख के पढ़ोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा रहेगा। ओके, इफ यू राइट एंड देन रीड, दैट थिंग्स स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम, एंड इफ यू आर जस्ट गिविंग अ रीडिंग यू विल फॉरगेट। मोर यू रीड मोर यू फॉरगेट, इतना याद रखो। जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा भूल जाओगे। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? बोलो, थोड़ा गैप देते हैं। बोलो, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कुछ पूछना है, जानना है, बोलो, फिर कंटिन्यू करेंगे। बोलो। एनीथिंग? रेशमा, No, sir. समझ में आ रहा है? मैंने Yes, sir. ओके, इट इज क्लियर।
गणतीश मरवाड़े। अच्छा, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? সৌমিলি প্রশ্ন আছে? না স্যার। अच्छा, सो गिव मी 30 सेकंड ब्रेक। हाँ, थोड़ा पानी पीने दो, गला सूख गया है चिक चिक के, थोड़ा पानी पीने दो। ओके, गला सूख गया, इतना चिल्लाया। ओके, कंटिन्यू, लेट अस कंटिन्यू द डिस्कशन। तो ये समझ में आ गया, ये वाला पीडीएफ क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? यहां से कोई सवाल नहीं है? तो यहां से अगर सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। सवाल है कुछ? ओके, लेट अस कंसीडर यू हैव नो क्वेश्चंस। सो दिस पीडीएफ 471 किलोबाइट पीडीएफ। ओके, उसके बाद एग्रीमेंट के बारे में मैंने बोला कि एग्रीमेंट के WIPO, व्हाट आर द एग्रीमेंट्स बिटवीन WIPO एंड IPO, दैट मींस इंडियन पेटेंट ऑफिस के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, वो सब यहाँ पे लिखा है, बस उसका ब्रीफ पढ़ना है। हाँ, देन कम्स मैनुअल ऑफ पेटेंट ऑफिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर। मैनुअल is generally studied during the training period. Okay, manual is generally studied during the training period, but just remember the key terms. Read this section, key definitions. Okay, key definitions में क्या है, बस उसको थोड़ा सा definition पढ़ो कि उसका वो टर्म अगर आए तो उसका मतलब क्या हो, वो तुमको मालूम होना चाहिए। You should remember that what is the meaning of the terminology. Okay, that's it. You should remember what is the meaning of the terminology. That's it. उससे ज्यादा कुछ नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस किस किस के अंदर क्या क्या पड़ता है, you have to remember this part. Okay, you have to remember this part. तो पोस्ट पेटेंट ऑफिस कहाँ पे है? इन 4 प्लेसेस, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। नॉर्थ मीन्स दिल्ली, मुंबई वेस्ट, चेन्नई साउथ, कोलकाता ईस्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. टाइप ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, पेटेंट एप्लीकेशन का टाइप, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, कन्वेंशन एप्लीकेशन, पीसीडी अंडर नेशनल फेस एप्लीकेशन, डिविजनल एप्लीकेशन, पेटेंट एडिशन। क्या क्या होता है? बस टर्मिनोलॉजीज पढ़ो, बस कॉपी निकालो, कॉपी में बस नोट डाउन करके टर्मिनोलॉजीज को याद करो। You have to just remember the terminologies. That's it. Not more than that, not less than that. Okay? यहां से बस यही पढ़ना है। उसके बाद जियोफिजिकल इंडिकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फॉर द एग्जामिनेशन देयर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द जीआई। जीआई टैगिंग होता है ना? जीआई टैग मालूम है? तो मालूम है कि नहीं है? अगर नहीं मालूम है तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज ब्रीफली डिस्कस्ड इन दिस पार्ट। देयर आर 71 पेजेस, लेकिन बट यू डू नॉट हैव टू रीड ऑल द पेजेस। ओके, जस्ट रीड द इंट्रोडक्शन। क्या, व्हाट इज जीआई? व्हाट इज जीआई? जीआई होता क्या चीज है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ो। ठीक है, ऑफिसर बनने वालों इतना नॉलेज होना चाहिए, पढ़ो, क्योंकि यहां से यहाँ पे जो तुम लोग पढ़ोगे, दोस्त the topics you will read in this part will help you in the interview section. Okay, will help you in the interview section. की definitions क्या क्या है, कैसे फिलअप किया जाता है, बस एक रीडिंग पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा रीडिंग पढ़ना है।
You don't have to read the complete PDF, just give a reading. Okay. यहाँ पे वो लिस्ट है क्या नहीं मैं देख लेता हूँ एक बार. नहीं वहां पे तो टाइमिंग नहीं है. ठीक है, बस रीड द हेडिंग्स, दैट्स इट. यहाँ से इंट्रोडक्शन पढ़ो और हेडिंग्स पढ़ो. सिमिलर फॉर डिजाइन प्रोसीड्योर, यहाँ पे बस वही पढ़ना है. सिमिलर पीडीएफ, यहाँ भी बस वही पढ़ना है कि उसका डेफिनेशन क्या है, दैट मीन्स उसका इंट्रोडक्शन क्या है डिजाइन्स का, और उसके बाद जो प्रोसीड्योर्स है उसका बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप. बस ये पूरा नहीं पढ़ना है क्या क्या किया जाता है, बस ये फ्लो चार्ट का टाइप. और फ्लो चार्ट कैसे बनता है, पहले जनरल एक आइडिया, उसके बाद कहाँ अप्लाई करना है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, बस ये सब. हाँ, एक जब भी पढ़ो, व्हेन यू विल स्टडी ऑलवेज कीप ए कॉपी विथ यू एंड नोट डाउन द मेन पॉइंट्स. ओके, मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा वरना मैं बना देता. मैं नौकरी करता हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, वरना मैं खुद ही बना देता तुम लोगों को पीडीएफ. So if anyone is making that kind of PDF, please do send in the group. Okay? Okay, sir. Do send in the group if anyone can make the PDF. उसके बाद पेटेंट एक्ट ये पढ़ने का जरूरत नहीं है. हाँ, रख दो, जिंदगी में काम में आएगा. और ये वाला तो मैं बोल ही दिया क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. यहाँ से चार्ट वगैरह है, फ्लो चार्ट वगैरह पढ़ना है यहाँ से. ठीक है, और एक्ट वगैरह याद रखना, कौन सा एक्ट कौन सा साल में पास हुआ, ट्रेडमार्क्स एक्ट कब पास हुआ, पेटेंट्स एक्ट कब पास हुआ, कब अमेंडमेंट हुआ, 2005 में अमेंडमेंट हुआ है, कॉपीराइट एक्ट, डिजाइन्स एक्ट, जियोग्राफी इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज फार्मर्स राइट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कौन सा एक्ट कब पास हुआ है. और बस ये फ्लो चार्ट जो पहले में मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले भी. ठीक है, यहाँ पे माद्रिद प्रोटोकॉल है, ये पढ़ के रखना, काम में आएगा. माद्रिद प्रोटोकॉल, हाँ, ये एक बार थोड़ा पढ़ के रखना. और उसके बाद पेटेंट्स का पार्ट स्टार्ट होता है. पेटेंट्स क्या होता है, प्रोसीड्यूर ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंटिंग. उसके बाद ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट पढ़ के रखना. बस यही सब पढ़ना है. ब्रीफ इंट्रोडक्शन, नथिंग इन डिटेल्स. सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ कौन सा है, ये वाला पीडीएफ. सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ कौन सा है, ये वाला पीडीएफ. ये तुमको याद रखना है कौन सा साल में कौन सा एक्ट पास हुआ है. बस ये बहुत वाइटल पार्ट है. हाँ, बहुत वाइटल पार्ट है. और इसमें सब कुछ का डिटेल्स है, डिफिनेशंस वगैरह है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक का नाम क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राइमर फॉर एकेडमी. बुक का नाम ही यही है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में काफी डिस्कशन इस बुक में किया गया है. सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, मैंने पहले भी बोला है. चैप्टर 1, उसके बाद चैप्टर 3 और उसके बाद चैप्टर 4 में ट्रीटीज और एग्रीमेंट का साल मत याद रखना, कौन से साल में कौन सा ट्रीटी पास हुआ है, इन विच ईयर व्हिच ट्रीटी हैज बीन पास्ड. यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट ओनली. ओके. और आईपी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया में क्या क्या आईपी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट. बस यही सब पढ़ना है और कुछ नहीं. उसके बाद एक समरी, उसके देयर इज अ समरी देयर, द समरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेज नंबर 233. लेट मी कम टू दैट पार्ट. Summary, यहाँ पे there is, you will get the definition of patent. What is the definition of patent? What is the eligibility criteria, acts and laws, administration, right, validity, exception. Okay, बस ये सब थोड़ा पढ़ के रखना.
ये काम में आएगा, बहुत काम में आएगा. This will be very much helpful. Summary of intellectual property. Summary of intellectual property. ये जो ट्रेडमार्क जो होता है इसका मतलब क्या होता है? टीएम जो होता है, टीएम होता है ना ट्रेडमार्किंग. तो व्हाट इज टीएम? Represent that the trademark is unregistered. Okay. FM represent that trademark is unregistered. This can be used for promoting brand services. This can be used for promoting brand services. और TM कहाँ भी यूज होता है? This mark can be used for promoting goods of the company. Promoting goods of the commodity. R का मतलब होता है registered trademark. Okay, registered trademark. फिर goods and services का geography indications का भी जिस तरह पर रखना, यहां से जिस्ट पर के रखना. तो कौन सा पार्ट हुआ इस बुक से? इस बुक से कौन सा पार्ट हुआ? चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. चैप्टर 3 that will be WIPO. Chapter 3 that is WIPO. Chapter 4 का chapter 4 only the treaty, name of the treaties and when and where it is signed. बस इतना. और उसके बाद IP organizations in India, which are the IP organizations in India, the names of that organizations. यहाँ पे काफी acronyms है, acronyms को याद रखना पड़ेगा. हाँ, you have to remember the acronyms for the examination. Okay, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Are you understanding or not? लास्ट में बस समरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. समरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें सब कुछ का समरी है. देखो, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिक इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड नॉलेज, सेमीकंडक्टर इंडिकेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, सब कुछ का एक यहाँ पे क्या है? देयर इज अ जिस्ट ऑफ एवरीथिंग. सो दिस पार्ट नॉट बहुत बड़ा नहीं है, 233 से 254 तक है, पढ़ के रखना. और लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस में शायद तुमको yes, there are acronyms. You have to remember the acronyms. Okay, there are acronyms and you have to remember the acronyms. What is ABC? Accessible Books Consortium. What is ADR? Alternative Dispute Resolution. Such kind of acronyms. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So this section, you have to read this all these things from this section. Any question? Any question? There are so many members in the group. Any question? यहाँ सब कुछ समझ में आ गया? Everything clear? Okay. Okay. Now tell me, what kind of help do you need from me for the examination hall? बोलो. What kind of help do you need? मैं क्या कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए? नोट्स तो मैंने दिया है जितना मेरे पास था, उसको छोड़ के मैं तुम लोगों को क्या हेल्प चाहिए बोलो. सर असाइनमेंट्स और फिजिक्स का आई विल प्रोवाइड सम असाइनमेंट्स ऑन फिजिक्स. दैट इज माय सब्जेक्ट, उसके बाहर तो मैं नहीं दे सकता. Specialization subject came in the audio and say, Sanidha, if you are in the group, I think Sanidha is there. I don't know. Yes, she's here. Sanidha came in the audio and say what you are saying. স্যার মানে মেকানিক্যালের পেপারটা কিভাবে পড়তে হবে, কোথা থেকে এটা যদি বলতে পারেন? তোদের বিটেকের সিলেবাস বাস, পুরো বিটেকের সিলেবাসটা তো জানিয়ে নিতে হবে. পুরো বিটেকের সিলেবাসটা পড়তে পারবি না, কিন্তু তোদের ইয়ের বই, টিসিএস এর বইগুলো আছে না, আরে ইয়ের বইগুলো বেরোতো না তোদের, ওই WBUT যে বইগুলো বেরোতো, ম্যাট্রিক্স, ইয়েস, ম্যাট্রিক্স ইজ দ্য জিস্ট, রাইট? হ্যাঁ, ওইটা পড়ে নিলে হয়ে যাওয়ার কথা. হয়ে যাবার তো কথা. আচ্ছা. And I have also provided books of GATE.
If you see in the group, I have already provided some books on GATE. স্যার GATE কোশ্চেন কি ECE, গেটের স্ট্যান্ডার্ডে আসে? GATE standard. Let me complete, okay? Huh? ওকে ওকে শিওর। There are some, I have provided some books on GATE ECE, GATE EE, that means electrical engineering, and GATE CSIT. So how to utilize those books? Those books contain problems, right? In case of MCQ examination, you do not have to show the calculation, but in the written examination, just you have to show. Otherwise, in the problems part, there is no difference. Theoretical section, there can be difference, but in the problem part, there is no difference. So you have to practice those problems and execute. Is it clear? Sanida Chapandi? Sir, one book you have left, that IP rights, laws and practices, something to 480 pages. IP right laws? Rights, laws and practices. उतना डिटेल्स नहीं चाहिए. I think I have discussed all those PDF ना. कौन सा PDF मिस गया? That 480 marks PDF. हाँ, 480 pages. Oh, 480 pages PDF you don't need. Okay. হ্যাঁ সানন্দ? স্ট্যাটিক জিকের পার্টটা কি করা যাবে? I have already said na, it is CGL based, so you have to study the CGL based papers. You have, if there are books like Lucent, Manohar Pandey, buy those book na. আর মানে লেভেলটা স্যার স্ট্যান্ডার্ড সিজিএল স্ট্যান্ডার্ড CGL স্ট্যান্ডার্ড কেমন হয়? না মানে আমি জিজ্ঞেস করছি যে এইটার জিকেটা কি সিজিএল স্ট্যান্ডার্ডেরই আসে? হ্যাঁ হ্যাঁ CGL স্ট্যান্ডার্ড. I think you have joined late. হ্যাঁ. I have already discussed those part. Okay. Any other question? Any other question? সুমনা, প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ শুনতে, হ্যাঁ বল কি প্রশ্ন? ওকে, দুজন, ও দেয়ার আর টু সুমনাস. ওকে, রেশমা? Sir, clear, sir. It's okay. Okay, sir. But sir, one more thing to say. बोलो क्या है? One more thing क्या है? Sir, we want distribute type questions. Descriptive type questions. For mains to practice. This is a physics part. You are studying physics, right? Yes. Okay, we will discuss the physics section. Don't worry. Neha? सवाल है कुछ? बोलो. Sir, I joined late. So, have you already discussed about the current affairs and general knowledge part? So, from here. Yes. I have already discussed. There are two. I have already discussed three of the phases. Introduction to the examination, discussion of the prelims and main syllabuses, and the third part is the discussion of IP laws and legislations. No, sir, I'm talking about the current affairs and general knowledge part. The current affairs, for the current affairs part, you have to study 1 year current affairs. Okay. Complete 1 year. Yes, complete 1 year current affairs. That is safe. Okay, that is safe. But I think 4 or 5 months is enough. I think no. अगर तुमको लगता है 4 और 5 महीने पढ़ने से हो जाएगा, तुम पढ़ो. कौन मना कर रहा है? Okay, sir. ठीक है. ओके. एंड डोंट लीव ना. तुम लोग लीव कर रहे हो, बाद में मत बोलना कि सर ये डिस्कस हो गया, वो डिस्कस हो गया. हाँ, लीव मत करो. व्हेन अ डिस्कशन इज गोइंग ऑन, डोंट लीव. So this Patent Act 1970 is beneficial in both prelims and mains part, or it's enough for the prelims only? No, both prelims and mains, and as well as in interview. Interview, okay.
तीनों पार्ट के लिए कवर हो जाएगा। Okay, sir. ओके ওকে সানন্দ বলো, সানন্দ কি প্রশ্ন বল। কাট অফের ব্যাপারটা বলে দেবে তো? আমি কর্ম না করে ফলে চিন্তা করি না, কর্ম কর তারপর ফলে চিন্তা করবি। First of all, you give the examination, then you will think about the cutoff. But as per my knowledge, the cutoff is not too much high. Okay, আচ্ছা, you can assume that মোটামুটি out of 150 for general category 110 to 120 will be sufficient to qualify. না মানে যেটা স্পেশালাইজড পেপার, যেটা স্পেশালাইজেশনের যে ব্যাপারটা Last year, the 2018 in chemistry paper, the cutoff was 93 approx. জেনারেল। Yes. कोई पढ़ता ही नहीं है, घर में पढ़ाई नहीं करता तो कैसे नंबर आएगा? सबको तो एक ही जैसे, एवरीवन इज सेम। हाँ पारस, बोलो, ऑडियो में आओ, बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो, यहाँ ऑडियो में बोलो। Okay, I think Paras has no question. Reshma? Sir, for current, okay. For current? for current June onwards or 22 on also. Your audio is not very much clear. और एक बार बोलो। For current affairs, we want the Your audio is lagging back. sir, am I audible? Sir, hello. You are audible sometimes and inaudible sometimes. Sir, for current affairs, we want to study from the whole 2022 onwards. No. 2023 is enough. 23 and half of the 2022. Okay, One sir. year is a safe mark. 1 year is a safe. Okay, safer Okay. range. Okay, sir. Okay. That's why I am saying 1 year. 1 year, when you are appearing for any examination, 1 year current affairs is important. Okay. Okay, अगर examiner समझ, if the examiner is क्या बोले, थोड़ा दिमाग से हटा हुआ इंसान है तो he can set question from 2022 also. He cannot say na. That's why it's better to read 2000. It is better to read at least 1 year current affairs. It is better. And if you are not, if you can't, then read 6 months current affairs. Okay, sir. Okay. Okay. सर Okay. सर करंट सर हाँ. हेलो सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना सही रहेगा? FS Cloud is good. FS Cloud is good for current affairs. FS Cloud. There are so many sites actually. कौन सा छोड़ के कौन सा बोलूं? Okay, let me give you a hint. Okay. CGL के पार्ट के लिए that is enough. Okay. For CGL part, Adda 24/7 practice mock textbook is enough. For the each sectional part, that means GI,
quantitative aptitude, general English, CA and GK. For the sectional mocks, individual mocks, there is ADA 24/7. Very good site. There are sectional छोटा एग्जाम होता है वहां पे, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट का एग्जाम होता है. GI का अलग होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का अलग होगा. सो यू कैन गेट ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल फ्रॉम दैट. सो मैंने क्या बोला, मॉक के लिए, CGL पार्ट के लिए ADA 24/7 प्रैक्टिस मॉक टेक्स्ट बुक, और ADA 24/7 के लिए GI ADA 24/7 से सेक्शनल मॉक्स, सेक्शनल. सेक्शनल मॉक्स के लिए अलग अलग सेक्शन, GI का सेक्शन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सेक्शन, जनरल इंग्लिश का सेक्शन, CA GK का सेक्शन, ये सब कुछ ADA 24/7 में अवेलेबल है. ठीक है. नाउ कंप्लीट मॉक. अवेलेबल है प्रशांत चतुर्वेदी सर के ऐप में. हाँ, प्रशांत चतुर्वेदी. ओके, प्रशांत चतुर्वेदी सर के वहां पे अवेलेबल है प्रशांत चतुर्वेदी. एंड ऑल्सो परहैप्स इन टेलीग्राम इन फ्यूचर. Perhaps in textbook in future they will take mocks for prelims. Okay, this will help in both prelims and mains. This help in both prelims and mains. मेंस में क्या है, पेन पेपर बेस्ड है, बस यही फर्क है. ठीक है. आई होप दिस विल हेल्प. सर ADA 24/7 এগুলো ফ্রি মক? ADA 24/7 से मैंने बोला कि CGL का जो सेक्शन है, दैट मींस द रेस्ट ऑफ द पार्ट, दैट मींस IP लेजिस्लेशन को छोड़ के उस पार्ट के लिए CGL का जो सेक्शन है वो ADA 24/7 प्रैक्टिस मॉक, टेक्स्ट बुक, हर जगह पे मॉक्स अवेलेबल है. ओके. और पार्शियल मॉक्स या फिर सेक्शनल मॉक्स ADA 24/7 में रोज होता है, डेली होता है. हाँ, दिस इज डेली. डेली. सो यू कैन गिव सेक्शनल मॉक्स. हम अगर सोते हुए, सपोज यू आर गोइंग टू स्लीप, ओके, सेव योर टाइम विदाउट टॉकिंग टू समवन वेरी बिलवेड, गिव अ मॉक. सोए से बिस्तर में सोए से मॉक दे दो. क्वांटिटी एप्टीट्यूड का अगर नहीं भी दे सकते, लेकिन जनरल इंग्लिश और CAG का तो दे सकते हो ना. यस सर. यूज दिस अपॉर्चुनिटी. एवरीवन क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? यस. एनी क्वेश्चन? হ্যাঁ সানন্দ, বলছি জিকেটা বাদ দেওয়া যেতে পারে কোনোভাবে, কি মানে করতেই হবে? জিকে বাদ দিলে তুই চাকরিটা মোটামুটি পাবি না, এটুকু ধরে নিয়ে পরীক্ষা দিস. আচ্ছা, স্ট্যাটিক জিকেটার কথা বলছি, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা না. If you want to do an exam experiment, you can give that. আচ্ছা. Okay. Okay, for the physics part, I have provided you books for each subjects, and जो books available था मेरे पास, मैंने सब जी स्टॉप करके दे दिया तुम लोगों को. The second part, I will provide you assignments. You have to solve. ओके. हाँ, घर में बैठकर सॉल्व करना है असाइनमेंट को. बुक्स, असाइनमेंट्स. और 3 नंबर क्या है? योर प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस. Without this, you cannot qualify the examination.
और फिजिक्स का सिलेबस या फिर जनरल केमिस्ट्री का सिलेबस, देयर आर टू पार्ट्स, BSc and MSc. But for BTech part, that means for engineering part, there is only BTech part. So the syllabus is not higher actually, because MSc से BSc से मोटामोटी तुम्हारा 60% आ जाएगा, इससे 40% आएगा. So you can, if you study, you can qualify. That's what I am saying. और मैं तो हूँ हेल्प करने के लिए, जिंदा तो हूँ अभी तक. Any question? Any question? अरे बोलो, कुछ है सवाल? No, sir. हाँ रेशमा. No, sir, I think it's clear. Okay. Negative marking, I think there will be a negative marking. If they are giving, they actually give 150 questions. Okay, they actually give 150 questions. So the negative marking will be 1/4 or 1/3, perhaps. I think 1/4. There is, I think there will be negative marking. मुझको याद नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग मेंशन था या नहीं था, एक बार देख के कोई बोल देना. I think there was negative marking. And if there is no negative marking, बल्ले बल्ले पंडा का चिस्को. Okay. Now those who are from physics background can stay, and those who are from engineering background now can leave. जो लोग इंजीनियरिंग से हो वो लोग जा सकते हो. तो मैं अभी थोड़ा फिजिक्स का डिस्कशन करूंगा. बाकी सब फिजिक्स का है. ओके सर, लीव. सर